This is the program which is used in the project simulation of midpoint line drawing algorithm using Python. Import sys. Sys is a module that contains information about the constants and functions and methods of Python. और फिर जो इस प्रोग्राम के थ्रू हमने जो इंटरफेस बनाया है दैट इज़ यूजिंग दी PyQt5 मॉड्यूल, तो उसको यूज़ करने के लिए वी हैव इम्पोर्टेड इट हियर with this line, and we have only imported the widgets from this module. We do not need everything which is there in this module, तो हमने सिर्फ यहाँ पे widgets को import किया है. And also to plot the line we need this matplotlib.pyplot, तो हमने इसे भी import किया है. Now here as plt here it just means that हमारे पास we have an object type that we can use to denote this part matplotlib.pyplot if we have to use any predefined function or methods of this module. Similarly ऐसे ही हमने array का भी यहाँ पे define कर रखा है. यहाँ पे हमारे पास 4 global variables हैं x1 y1 x2 y2. now तो जो हमारा interface है, जो हमारा GUI है, उसे डिज़ाइन करने के लिए हमने ये क्लास बनाई है which is the class input dialog, QDialog. now QDialog is a widget which presents a window which is mostly used to collect any response from the user. तो हमें भी user से we need response which is the inputs, the initial and final coordinates of the line. तो उसके लिए हमने यहाँ पे QDialog inherit किया है. now define underscore underscore init underscore underscore self. init here is a reserved method in Python classes. ये कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है. एंड ये मेथड इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास एंड इट अलाउज द क्लास टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास. सेल्फ जो है दैट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और बाय यूजिंग सेल्फ हम इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ दिस क्लास. now the super dot underscore underscore init underscore underscore calls the init function of the superclass. This is the basic initialization of the class. and this here self dot set window title midpoint line algorithm inputs, जो हमारी window आएगी where the user will enter the initial and final whatever the input is, where the user will enter the inputs, उसका title this will set the title as midpoint line algorithm inputs. now we need 4 inputs from the user, so we have defined 4 qline edits and we have named it as first, second, third and fourth. now qline edit is an object that provides a box in which only one line of text can be entered, not multiple lines. तो हमें तो सिर्फ coordinates चाहिए, so this will work fine. and now this is the buttons which are OK and cancel. so QDialog button box is a class that is a widget जो कि जो भी हमारा layout है. in this particular program we have used the form layout. so this button box helps to create buttons with according to the layout of the interface. whichever layout or whichever style is appropriate, it sets the button accordingly. and here we have defined the layout of the GUI. now we have defined 4 input boxes which is defined by qline edits. now for the user to know which box takes what input, we have added these boxes to the layout row wise, and this the text will appear on the left hand side of the qline edit widget. and also we have here added the buttons which is the OK and the cancel button.
Now there are some predefined buttons in PyQt5. So we have defined OK as self.accept and cancel as self.reject. Now the second function which is defined is to take the inputs from the user and convert it to int, because whatever the user will enter in the qline edit box, that will go as string or as text. So we need to first convert into int to use it in the rest of the program. Now this is the midpoint algorithm. Just a brief of how this works is these x1 and y1 are the initial coordinates and x2 and y2 are the final coordinates, and this uh, method calculates the point using the midpoint algorithms, and it stores in this array A. So this array A stores all the x coordinates and this B stores all the y coordinates, and then this function calls draw AB x2 and y2. So this draw function plots the graph, and now here PLT, as told you earlier, PLT जो है वो matplotlib.pyplot का एक ऑब्जेक्ट है. हम matplotlib.pyplot इतना बड़ा लिखने की जगह will only write PLT and this will work fine. So the title of the graph would be midpoint line algorithm, and here we have defined the minimum limits of x and y. These are the labels, and that is all how this is going to plot. The midpoint algorithm and this function would be explained in detail in another video. Now this is the main function. This is where the program would start. And now if name equals to main, so जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम एज पाइथन स्क्रिप्ट रन करते हैं, तो जो अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर जो ये वेरिएबल होता है, ये बिल्ट इन वेरिएबल होता है जिसको पाइथन ये नाम असाइन कर देता है, विच इज़ अंडरस्कोर मेन सो ये हमेशा असाइन कर देता है. और अभी तक हमने जितना भी बनाया है, द मेन फंक्शन एक्ट्स एज द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो यहाँ पर हमने बस स्क्रिप्ट लिखा है. दिस विल नॉट वर्क, दिस विल ओनली वर्क आफ्टर बी एग्जीक्यूटेड. तो नाउ टू एक्चुअली रन द थिंग वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन ऐप. हमें एक ऐप का इंस्टेंस बनाना होगा जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. और ये क्यू एप्लीकेशन है, एक क्लास है दैट मैनेजेस द GUI एप्लीकेशन, एंड sys.argv initializes it. It initializes Q application. Also जो हमने यहाँ पे विंडो बनाई है इस क्लास के थ्रू, वी नीड टू इनिशियलाइज दिस. तो हमने मेन में यहाँ पर इनिशियलाइज किया है with this dialog is equals to input dialog. And now हमारे कोड में when we enter the inputs, the input can be integers or can be floating numbers or can be text, so they might cause an exception. तो हमने इसलिए उसका कोड यहाँ पर रखा है, try block में रखा है. Now the class is initialized and this is the name. तो हमने इसको execute किया and we need the inputs from the user जो कि हमारे points हैं, which is x1 y1 x2 y2. तो हमने यहाँ पे dialog.getInputs कॉल किया. तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन जो हमारा क्यूलाइन एडिट है, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया होगा उसे int में कन्वर्ट कर वापस मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा. So the initial x coordinate will be stored in x1, initial y would be stored in y1, final x in x2, and final y in y2. If the user gives the correct input, means everything is an integer, midpoint function जो है वो कॉल हो जाएगा and this would be passed as parameters to it. और यहाँ से ये midpoint function work करके it would calculate all the coordinates, and then it would call the draw function, and this draw function would plot the line. In case if the user
enters wrong input, it would cause an exception, जिसको हमने यहाँ पर define कर रखा है. If the user enters anything apart from int, वो exception में आ जाएगा. And